अगर आपने मेरा अभी लेटेस्ट वीडियो देखा है तो उसमें हमने बात करी थी कि साइकोलॉजिकल अथॉरिटी क्या होती है। हमने समझा था कि टीनेजर्स को हैंडल करने के लिए सिर्फ चिल्लाना, पनिशमेंट और मैं टीचर हूँ, मेरी बात मानो वाला अप्रोच काम नहीं करता। लेकिन उस वीडियो के बाद मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला। मैम, अगर स्टूडेंट सिंपली नो बोल दे तो क्या करें? और सच में यही वो सिचुएशन है जहाँ क्लासरूम मैनेजमेंट थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है जब बच्चे बिल्कुल नो बोलते हैं। बिकॉज अब प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टूडेंट के बिहेवियर की नहीं है, अब प्रॉब्लम बन जाती है पावर स्ट्रगल की। टीचर कुछ बोलता है, स्टूडेंट सामने से चैलेंज करता है, टीचर दोबारा एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट फिर आर्ग्यू करता है और धीरे धीरे पूरी क्लास देख रही होती है, राइट? आखिर जीतेगा कौन? लेकिन टीचर्स, आपका गोल स्टूडेंट से आर्ग्यूमेंट जीतना है ही नहीं। आपका गोल है अथॉरिटी मेंटेन करना विदाउट लूजिंग योर कंपोजर। सो टुडे I am going to tell you the practical scripts for that. ऐसे sentences जो आप actual classroom situation में use कर सकते हो। And believe me, आपको loud होने की ज़रूरत ही नहीं है। Let's start. First number, when a student challenges you publicly. Imagine कीजिए आपने क्लास को एक असाइनमेंट दिया और एक स्टूडेंट लाउडली बोलता है, Why should I do this? ये तो बिल्कुल यूजलेस है। अब नॉर्मली टीचर क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? डोंट टॉक लाइक दैट, जस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू। तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है? और स्टूडेंट बोलता है, बिकॉज दिस इज बोरिंग। अब टीचर और स्टूडेंट दोनों आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट में आ गए और पूरी क्लास ऑडियंस बन गई। पर आपको स्टॉप करना है। आप कामली स्टूडेंट की तरफ देखिए और कहिए, आई अंडरस्टैंड दैट यू फील दिस वे, वी कैन डिस्कस इट आफ्टर द क्लास, राइट नाउ आई नीड यू टू स्टार्ट द टास्क। बस फिर टर्न कीजिए और किसी दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट अगर फिर भी बोले, बट वाई, आपको फिर से 10 मिनट एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली से, आई सेड वी कैन डिस्कस इट आफ्टर क्लास, राइट नाउ प्लीज स्टार्ट द टास्क, और मूव ऑन फ्रॉम देयर। वाई? क्योंकि sometimes the student is not actually looking for an answer, they are looking for an audience। और जब आप पब्लिक आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू करते हो, इसलिए याद रखिए, रिमूव द ऑडियंस। डिफिकल्ट कन्वर्सेशन आफ्टर क्लास, प्राइवेट कन्वर्सेशन, नॉट इन फ्रंट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। बिकॉज एक टीनेजर को पब्लिकली डिफीट करना आपकी अथॉरिटी नहीं बढ़ाता। समटाइम्स इट एक्चुअली क्रिएट्स मोर रेजिस्टेंस। नंबर 2, आप मान लीजिए स्टूडेंट ने रूल ब्रेक किया, कोई भी एक रूल ब्रेक किया, आपने कॉन्सिक्वेंस दिया उसको, जो भी उसका था, और स्टूडेंट इमीडिएटली बोलता है, बट मैम एवरीवन एल्स वाज आल्सो डूइंग इट, मे बी आई सॉ यू डूइंग इट। तो स्टूडेंट कहता है, बट व्हाई ओनली मी? आप एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट फिर से यही बोलता है, दैट्स नॉट फेयर मैम, और सडनली आपका पूरा लेसन रुक गया वहां पे। दिस इज वेयर यू यूज द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक, एंड दैट इज, इसका मतलब है रूड होना नहीं है, इसका मतलब है सेम काम सेंटेंस रिपीट करना विदाउट गेटिंग पुल्ड इनटू द आर्ग्यूमेंट। आप बोल सकते हैं, आई hear you, the rule is the same for everyone, you chose to break it, so this is the consequence। फिर वो बोलेगा, but everyone else was doing it too। आपने क्या बोलना है, I hear you,
The rule is same for everyone. This is the consequence. Student ये कह सकता है, but why only me? You should say, I understand your concern. The rule is the same for everyone. This is the consequence. Notice what you're not doing. आप voice raise नहीं कर रहे हो, आप sarcasm भी नहीं कर रहे हो, right? आप student को insult तक नहीं कर रहे हो, और सबसे important new arguments create नहीं कर रहे हो, right? Because every additional explanation gives the student another point to debate. आपको हर क्वेश्चन का 5 मिनट आंसर देना जरूरी नहीं है. कभी कभी काम रिपीटिशन इज मोर पावरफुल देन अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन. एक ही बात को आप बोलिएगा. एंड रिमेंबर, द मोमेंट यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग emotionally with a teenager, you have moved from being the teacher to being another participant in the argument. Correct? Don't enter this game at all. Stay calm, stay neutral, repeat the boundary, and move on. Number 3. When the student simply refuses, बस मना ही करता है, तो इस सिचुएशन में, टफेस्ट सिचुएशन में क्या करेंगे? यू गिव एन इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट लुक्स एट यू एंड सेज नो, आई एम नॉट डूइंग इट. अब टीचर के लिए ये पर्सनली चैलेंज फील हो रहा है, बिकॉज 30 स्टूडेंट्स के सामने आपको ओपनली रिफ्यूज कर रहा है वो, या कर रही है. आपके माइंड में इंस्टेंटली आ सकता है, तुम मुझे नो कैसे बोल सकते हो? लेकिन यहीं पर आपको इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल करना है. इंस्टेड ऑफ सेइंग डू इट राइट नाउ, डोंट चैलेंज मी, वेट टिल आई कॉल योर पेरेंट्स. गिव अ स्ट्रक्चर्ड चॉइस. फॉर एग्जाम्पल, you have 2 choices. You can start the assignment now and complete it during the period, or you can follow the school's established consequence for not completing the work. You can choose which option works for you. Now something very important. चॉइस का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट को रूल्स चूज करने हैं. The student is not choosing whether the rule exists. The student is choosing between 2 acceptable outcomes within the school system. And please don't invent consequences. अगर आपके स्कूल पॉलिसी में लंच डिटेंशन नहीं है तो you can stay during lunch मत बोलिए. अगर आपको पेरेंटल कम्युनिकेशन का अथॉरिटी नहीं है तो उसकी थ्रेट भी मत दीजिए, बिल्कुल भी. योर चॉइस मस्ट स्टे विद इन योर स्कूल्स एस्टैब्लिश्ड डिसिप्लिन पॉलिसी. द पावर ऑफ द टेक्निक इज नॉट द पनिशमेंट. द पावर इज you are giving the teenager some sense of control without giving away the boundary. And teenagers often crave control. So instead of obey me, the conversation becomes, here are your options, you decide. That changes the dynamic completely. Now there is one more thing I want every teacher watching this video to remember. It is not only what you say, it is how you say it. Your voice should be low, your face should be neutral, your body language should be very confident. And don't stand there waiting for the student to challenge you again. Give the instruction, give the choice, then move on. Because sometimes the biggest mistake a teacher makes is standing there and waiting for the teenager to respond. You need the last boundary. And there is a huge difference between the two. Let me give you an example. A student says, you can't make me do this. You don't need to say, oh yes, I can.
You don't need to prove your authority. Simply say, you don't have to agree with the instruction, but you do have to follow the school's expectations. We will discuss your concern after class and just walk away. That is psychological authority. Not shouting, not threatening, not humiliating. Calm, clear, consistent. And teachers, please remember one more thing. A teenager challenging you does not always mean that you have lost control. Sometimes teenagers are testing the boundary. They are asking, will this teacher lose her temper? Will she back down? Can I get a reaction? And your answer should be through your behavior. No, I am not going to lose my temper, and I am not going to abandon the boundary either. That is the message. So, the next time a student argues with you, don't immediately think, how do I win this argument? Ask yourself, how do I maintain the boundary without turning this into a power struggle? Because your job is not to defeat the teenager. Your job is to create a classroom where learning can happen. And remember this line always, you don't need to be louder than the teenager. You need to be calmer, clearer, and more consistent. You don't need the last word. You need the last boundary. If you have experienced a student who simply say no, argues with you in front of the entire class, or tries to become the hero of the classroom, tell me in the comments. Tell me exactly what happened. Because I want to take some of your real classroom situations and address them in the next video. And if you are a teacher, coordinator, principal, or school leader who wants practical solutions to the real problems happening inside schools, subscribe to my channel, because here we are not talking about perfect classrooms. We are talking about real classrooms, real teachers, and real problems. I'll see you in the next video. Take care, and don't forget to press the bell icon for notification for my next video. Whenever it comes, subscribe and do like and comment also.